Good evening, guys. I hope everyone is good and well. And today we are going to start our second element of Nebosh Ig Management of International Health and Safety. This element is about health and safety management system. It have some components which is very important components, and they have a key role in the health and safety management system of any organization. By the way, you can see my screen, right? Yes, sir. Okay. So similar to yesterday, anyone have any comment, any concern, any issue, any doubt, just let me know. I am here to clear it today, tomorrow, after tomorrow, or any time before your exam. Okay, what are the learning outcomes of this element? After studying or after completing this element, you will be able to outline the key elements of health and safety management system. You can explain the purpose of importance of setting policy, why policy is required, or what is the importance of setting a policy. You can describe the key features and appropriate content of an effective health and safety policy. This is the learning outcome of this element. So this element is have some further divisions like 2.1 key elements of health and safety management system. Okay, as per ILO-OSH, safety health and management system, this ILO or OHS system is following up with a PDCA cycle, where P stands for plan, do it, then check what you are doing and what's going on. And in the check phase, we are checking that are the implemented controls are performing well or no, and act. After analyzing the check phase, or after analyzing or after checking, we have to go through act. After the findings, what are the findings? Compliances, non-compliances, areas of improvement, or what are the requirements? Accordingly, we will assign or we will suggest or we propose new control measures. That is an act phase. So simply अपने पास ये एक प्लान डू चेक एक्ट का एक सर्कल है. सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम करते हैं फिजिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज डू. देन हम उसको चेक करते हैं कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है या जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनमें कितना गैप है, उनमें कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन से लूप होल्स हैं, कौन से ड्रॉबैक्स हैं. और उस एनालिसिस के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद फिर हम एक्ट करते हैं दोबारा से. फिर हम नए कंट्रोल या नए मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. फिर प्लान डू चेक एक्ट, इसी तरह से एक सर्कल कंप्लीट करते हैं. Okay, and here is the safety management system. Let me maximize my screen if it works with us. Okay, safety management system starting with policy, then organizing, then planning and implementation, then evaluation, then action for improvement, and again it go for audit, again it go for policy. Okay, सबसे पहले हम पॉलिसी बनाते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में होता है उसको कैसे बनाया जाएगा और कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, किन के पास होंगे. फिर हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि उसको फिजिकली या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसको एवेल्युएट किया जाता है कि जो टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो लॉजिकल हैं, वो एक्यूरेट हैं, वो असेसेबल हैं. अगर हैं तो किस लेवल तक वो हम उनको अचीव कर रहे हैं. जो गोल थे वो स्मार्ट गोल हैं या नहीं है, तो हम उनको एवेल्युएट करते हैं. और आफ्टर एवेल्युएशन अगर हम देखते हैं कि कुछ एरियाज हैं जिनको इम्प्रूव करना जरूरी है, तो फिर हम उनके लिए एक एक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लान करते हैं. वो भी एक रिटन डॉक्यूमेंट और एक स्केड्यूल होता है कि ये चीजें करनी पड़ेंगी, इसके लिए ये पार्टीज और या ये स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसके लिए इतने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, इतनी मैन पावर और इतना टाइम चाहिए होगा. ये वो होता है एक एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट. उसके बाद ऑडिट होता है. ऑडिट के बाद फिर हम दोबारा उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और प्लान करते हैं और फिर एवेल्युएट करते हैं. ये एक बिजनेस साइकिल होता है जो कि ईयरली इसको मेंटेन किया जाता है. Key elements of OHS 2001. What are the key elements? Key elements are here. First of all, policy.
organization, planning, evaluation, action for improvement, then others. We just discussed all this in the previous slide. Policy, organization, planning, evaluation, action for improvement, and then others. तो ये एक साइकिल की तरह होता है कि हम पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। आप इसको एक मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लीजिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का काम है वेयर हाउस का, मटेरियल्स आते हैं, स्टोर होते हैं और बाहर चले जाते हैं कुछ दिनों के बाद। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनी हुई है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, लेकिन फिर भी फर्स्ट एड इंजरीज बहुत हो रही हैं, या मटेरियल उठा करके जब लेके जाते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसमें इंसिडेंट्स हो रहे हैं या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं फॉल ऑफ मटेरियल के। तो क्या होगा, जो मैनेजमेंट होगी वो अपनी पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करेगी। वो रिव्यू करेंगे अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, कि जो सिस्टम हमने बनाया था वो चेक करेंगे सबसे पहले क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर इम्प्लीमेंट हुआ है, हाँ, वहां पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ना हुआ हो तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट है लेकिन उसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ चीजें थी जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में या रिस्क असेसमेंट में इग्नोर हो गई, जिनको कंसीडर नहीं किया गया, तो उनकी वजह से उनको नए कंट्रोल मेजर्स लगाने पड़ेंगे। ये एवेल्युएशन स्टेज होगी। तो नए कंट्रोल मेजर्स लगाने के लिए एक एक्शन इंप्रूवमेंट होगा। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन है? Guys, इसको repeat करें, so I can repeat this. Yeah, sure. Sufyan? Okay, guys. So I'm giving you an example that you are working in a warehouse and you are a safety representative. In the warehouse management, they prepare a policy, they prepare a health and safety management system. So after a few months or after 6 months, they realize that still there are more incidents or accidents are happening. So it means that the health and safety system is not working properly. So वो क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। उसको एवेल्युएट जब करेंगे, ये एक क्रिटिकल फेज है एवेल्युएशन का। उसको एवेल्युएट करेंगे कि जो प्रोसेस था या जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम था वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो इम्प्लीमेंट है इन फुल फॉर्म लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो मतलब वो कंप्लीट नहीं है, उसकी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में या रिस्क असेसमेंट में कुछ मिस हो गया, कुछ इग्नोर हो गया मैनेजमेंट से, कोई ऐसे हैजर्ड थे जो इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए और कुछ ऐसे हैजर्ड थे जिनके कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए गए, इस वजह से इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, एक एक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट बनाएंगे कि ये चीजें हमें यहाँ पे मजीद करनी है। फॉर एग्जांपल पेडेस्ट्रियन वे बनाना है, पीपीस को इम्प्रूव करना है, सुपरविजन इम्प्रूव करनी है, ट्रेनिंग्स देनी है। तो ये सब कुछ जुबान से बोलने से नहीं हो पाता, एक दिन में या पलक झपकने में नहीं होगा। तो इसके लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है। वो टाइम फ्रेम जो होता है उसको बोलते हैं एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। जो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, इसमें सबसे पहले वो चीजें होंगी जो करनी है, फिर उनका टाइम स्केल होगा, फिर वो बंदे होंगे जिन्होंने ये करनी है, जितने रिसोर्सेज चाहिए या जितनी मैन पावर चाहिए वो पूरी डिटेल्स होती है एक्शन प्लान में। उसके बाद फिर से उसका ऑडिट किया जाता है। ये एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होती है इसमें। और इसके की एलिमेंट्स हमने पहले पढ़े हैं, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, evaluation, action for improvement, and then others. So policy क्या होती है? Policy is a clear statement of commitment to health and safety. Policy is a written and signed document which showing the management commitment for health and safety. It's showing the aims and objectives and the targets of the management. For example, management wants zero LTI, management wants zero fatality. They want less first aid cases. They want more near misses to be reported. ये होती है policy. That's all policy. And also management is showing their commitment and it's signed by the senior most manager or the senior most person of the employee, maybe managing director, maybe CEO. When it's signed by the CEO, it have influence on the workers. People will feel that yes, this is signed by the owner, so it means it is something serious and it need to be implemented. And then the second is organizing. Organizing is the distribution of roles and responsibilities for health and safety. In this section, the management, they allocate the responsibilities to different people, like who is responsible of doing this, who is responsible for doing that.
Then at all levels in the organization में हर लेवल पे हर बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ ना कुछ करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी में। वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल सीईओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होंगी, बट एवरीवन इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल। Then planning and implementation. This is a detailed arrangements to manage health and safety. Here they allocate resources, here they allocate manpower, here they allocate the required support from the management. And here they will conduct the risk assessment, they prepare the plans and procedures like practical implementation or practical preparation of the plans and procedures. That is planning and implementation. And then the evaluation. The fourth is evaluation. In this phase, they are evaluating methods to monitor and review the effectiveness of the arrangements. जो arrangements किए थे उनको review करने का time आ गया है, उनको check करेंगे different techniques के साथ कि जो implementation हमने की थी वो valuable है या नहीं है, या if it's going well, if it's performing well, the targets and goals are being achieved, that is very good. If not, then there is an action for improvement. Action for improvement steps to correct issues found in the review. जो रिव्यू हुआ था उसमें जो स्टेप जो इश्यूज पाए गए हैं, जो लूप होल्स या ड्रॉबैक्स या कुछ मिसिंग चीजें पाई गई हैं, तो उनको सही करने का टाइम है। उसके लिए कुछ स्टेप चाहिए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कितने टाइम में, कितने पैसे चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए। तो ये सारा एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट होगा। एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट के बाद फिर क्या होगा, फिर ऑडिट होगा। ऑडिट होता है कि इंडिपेंडेंट क्रिटिकल सिस्टमैटिक रिव्यू या एनालिसिस ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। एक बंदा जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होता, वो आके बारीकी के साथ वेरी केयरफुली इन अ क्रिटिकल मैनर्स वो चेक करता है कि जो रिक्वायर्ड गोल्स है वो अचीव हो गए हैं, जो HSE मैनेजमेंट सिस्टम था वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। What are the key elements of ILO-OSH health and safety management system? We have just read starting from policy and ending with the audit. Okay, now we are in the second element 2.2, purpose and importance of setting policy for health and safety. अब हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को बनाने का पर्पस क्या होता है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ओके, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. The foundation stone for good health and safety management is in an organization. How good is the policy? It's showing the commitment of the organization. If the organization doesn't care about policy at all, it means the base, the logic, or the basic thinking of the organization or the employer are not that much good for safety. For example, when we are going to construct a house, we always focus on the start, on the foundations of the house. The foundation should be good. The foundation should be strong. If the foundation is not strong, means the other structure will collapse one day. So set out the organization's aim. Policy जो है उसमें organization के aims और objectives जो होते हैं वो लिखे गए होते हैं कि कौन कौन से aims हैं। ये identify करती है who is responsible for achieving these aims. जो targets बनाए हैं उनको achieve करने के लिए कौन responsible है. States how the aims are to be achieved. It also describes how we are going to achieve the aims. For example, zero incidents. How we are going to achieve with more trainings, with more supervision, with competent staff, with adequate inspections and audits and HSE management system. This is how they are going to achieve. And specific to each organization requirement, yes. A same policy is not applicable for all organizations. For every organization, there should be a different policy. Why there is a different policy? It based on the scope of work, nature of the organization, nature of their job, number of employees, size of the organizations, the use of materials, substances. All this depends on the things. According to these things, the policy is being implemented, and it also have impact from the local and international standards. Why might the health and safety policy of two organizations be different? Yeah, I just explained to you why two organizations have different policy, because both have different scope of work, both have different
aims and objectives both have different management, and the management have different visibility, different mentality. Why isn't there a prescribed one-size-fit-all approach to developing a policy? No, there is no approach. The reason is nature of work, scope of work, type of work, geographical locations, legal and local standards. These all are different from country to country, policy to policy, and client to client. That's why there is no set policy for each organization. Why have a written policy? Yes, policy written क्यों चाहिए होती है? This is a very important question. The policy should be written, should be signed, and should be communicated with all employees of the organization, top to bottom. Each of the employee have to go through the health and safety policy. First of all, it's a legal requirement that it should be written. Second, it's a requirement of ILO-OSH 2001, and it's a requirement of OSAS 18001, which is ISO 45001 now. And if it's written, it's very good in communication because it's the same for everyone. So a clear communication will be spreaded everywhere. हर बंदे को एक जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी. जब एक चीज लिखी हुई है तो उसको 10 दफा भी पढ़ा जाएगा तो सेम वर्ड्स रहेंगे, सेम मीनिंग्स रहेंगे. लेकिन अगर वो लिखी हुई नहीं होगी, सिर्फ जुबानी होगी, तो क्या होगा? शायद मुझे बताने वाले ने 10 चीजें बताई होंगी, अगले बंदे को वो 11 बताएगा, तीसरे बंदे को वो 9 बताएगा, क्योंकि कुछ मिस हो सकता है जो वर्बल होगा. और अगर लिखी हुई होगी तो आप उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ज्यादा, मतलब जब भी एडिट करना होगा उसको एडिट करके दोबारा से साइन करवा के डिस्प्ले कर सकते हैं. तो उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ऑप्शन रहती है. Why is an organization's policy so important? We just signed study or discussed that the organization policy is very important because it shows the management commitment and the organization's aims in health and safety. Why might two organizations doing similar work have different policies? Yes, it depends on the size of the organization. Although they are doing the similar work, but maybe the geographical locations are different. For example, a company working in Saudi Arabia and a company working in Pakistan, both are manufacturing the towels, bath towels. So both have the different policy. Yes, there is a requirement of Saudi laws and requirement of Pakistani laws, as both countries have different laws and regulations, so policy will be different. Now, key features of health and safety policy. Health and safety policy have 3 key features. First one is the statement of intent. Statement of intent क्या होती है कि what's going to be done, हम क्या करने जा रहे हैं और क्या होगा इसके बाद, या हमारे कौन से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं इस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के साथ, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. इसमें लिखा होता है पॉलिसी में, मैनेजमेंट इज कमिटेड टू complete the project with zero accident or with zero LTI. That is statement of intent. Then organization, who is going to do it? Top management या senior management या managing director of the organization, he is the one who is assigning the people, and he is the one who is responsible to ensure that health and safety policy is developed and implemented. So organization segment, in this section, organization clearly communicate that who is going to do this one, like who is responsible, and then the arrangement section, how they are going to do it. For this section, it's very clear for the implementation, like how it will be implemented. It related to allocation of resources, manpower, etc., and the distribution of the powers. Let me admit Sufyan. सर इसको रिपीट कर दें. स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होती है कि पर्पस क्या है आपका, कंपनी किस काम के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बना रही है, उनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का एम होता है वी आर गोइंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद जीरो एक्सीडेंट और विद जीरो LTI. वो एक एम होता है. ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होती है जो उनकी कमिटमेंट को शो करती है. फिर ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट, उसका दूसरा हिस्सा होता है. ये जो 3 है ना, ये पार्ट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के. ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि क्या, कौन इसको करने के लिए जा रहा है, और अरेंजमेंट सेक्शन में होता है कि कैसे करने जा रहे हैं इसको. जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. अब हम उन तीनों को दोबारा एक दफा
एक्सप्लेन करते हैं। सेटिंग ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको सेट किया जाता है। Complying with the law, it ensures that the company, the organization is complying with the legal requirements. It helps in achieving the standards. What the standard they set, it helps them to achieve the standards, and it remind workers at all levels of their responsibilities. Yes, it's also mentioned in the safety policy that everyone is responsible for health and safety policy and it is signed and dated by the मोस्ट सीनियर पर्सन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मोस्ट सीनियर पर्सन ने इसको साइन किया होता है और वो इसको एनुअल रिव्यू करके दोबारा से साइन करते हैं नई डेट के साथ, ताकि इन्फ्लुएंस कायम हो सके, मैनेजमेंट की कमिटमेंट शो हो सके कि मैनेजमेंट कमिटेड है और जो टॉप मैनेजमेंट है या ओनर है या एम्प्लॉयर है वो इसको साइन कर रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट पे ये चीजें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो फिर रेगुलर रिव्यू होता है, इसका रेगुलर रिव्यू चाहिए क्योंकि लीगल्स जो होती हैं चीजें वो चेंज होती रहती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से रेगुलरली इसको रिव्यू करना होता है। नाउ ग्रुप डिस्कशन ये है कि टारगेट्स में बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट to show commitment to the improvement. What targets could be included? General examples. Anyone can give any example, like which targets are required to be included in the statement of intent? Okay, I will go through this again. Statement of intent में aims and objectives लिखे होते हैं, तो क्या aims हो सकते हैं? Achieving the project with 0 LTI. Very simple. यही एम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का उनकी पॉलिसी के अंदर। ये फिर इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ये ब्लैंक है लेकिन सिमिलर टू दैट हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके बाद एम्प्लॉइज होते हैं। तो जो मैसेज होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का वो मैनेजर्स डायरेक्टर से मैनेजिंग डायरेक्टर से जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स को और वो इसको कम्युनिकेट करता है तमाम मैनेजर्स के साथ। फिर मैनेजर्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सुपरवाइजर्स को और सुपरवाइजर इंश्योर करते हैं वो सेम इम्प्लीमेंटेशन अप टू ईच वर्कर। ये एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बयान की गई होती है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन जो कि हमने उसमें दूसरे नंबर पे पढ़ा था, outlines the chains of command for health and safety management system. Organization section में it's a clear allocation of roles and responsibilities, who is going to do and how is going to do and how much time is required, and it shows the line of communication and feedback. इस सेक्शन में क्या होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे विल असाइन डिफरेंट पीपल्स टू परफॉर्म. You are the one to ensure the compliance. You are the one who is ensured to implement of health and safety policy. You are the one who is responsible for the audits. You are the one who is responsible for inspections. Like all these sections are being discussed and arranged in the organization section. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की जाती हैं कि ये लोग हैं ये काम करेंगे और इस काम का फीडबैक देना होता है। क्लियर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल होते हैं कि अगर इन केस कोई इंसिडेंट होता है तो क्या करना है, किसने किसको रिपोर्ट करना है और जो रिपोर्टिंग प्रोसीजर है उसको कैसे एक्सेलरेट करना है। ये होता है अरेंजमेंट सेक्शन। ओके, अगेन सेम डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सीईओ ऑफ एमडी। मैंने पहले आपको बताया कि सीईओ और द एमडी इज द वन who is ultimately responsible for health and safety of the organization. Then management like directors or senior managers, board of director, members of board or senior managers, floor managers, supervisors, engineers, फिर ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे आगे शिफ्ट होती है। सबसे पहले एमडी इज द वन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल, देन द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट. All employees are responsible for acting safely. So in this section they are mentioning that who is responsible. As I told you, everyone is responsible, but responsibilities are
vary from person to person, department to department. And the competent persons are responsible to provide the trainings and first aid facilities, fire marshals in the project or in the workplace, and specialist health and safety practitioner. They are responsible for providing advice to support the management and employees. Safety professionals जो होते हैं उनका काम है कि वो मैनेजमेंट को एडवाइस करेंगे कि ये जो काम आपका हो रहा है, जो लिफ्टिंग प्रोसेस है, ये ठीक नहीं है, इसमें ये चीजें दोबारा डालनी पड़ेगी, ये लीगली कंप्लायंस इसमें नहीं हो रहा, अगर गवर्नमेंट या कोई लीगल अथॉरिटी आके आपको पकड़ेगी तो आपको फाइन हो सकता है. This is the role of safety professional to advise the organization or to advise the management. Next is the arrangement section. Describe how things are done. Detailed description of policy and procedures. Usually a long document, often separate from the policy document, unique to each organization. This same, the policy is unique for each organization. Similar to that, this section is also unique because every organization have their own protocols, they have their own methodology. Anyhow, in the arrangement section, they are mentioning in details how the things to be done, how the plans and procedures to be prepared. It will be prepared by third party or internally, how the audits will be done, who is responsible to conduct the audits, how the reports will be shared with the other stakeholders like to the clients, to the municipality or other authorities who are involved in the project reporting. Next example of topics. What are the topics in arrangement section? Like carrying out the risk assessment, who will carry out and how many risk assessments are required. This is an example of the topics, okay? Then information, instructions and trainings. How and who will provide the trainings and how they will provide. Compliance monitoring, including audits. Compliance monitoring means, is it in compliance with the legal requirement or no? And audits, accident and near miss reporting procedures and investigation procedures, consultation with workers, developing safe system of work, welfare and first aid provision. These all are some topics, like examples of the things which are being arranged in the arrangement section. Next is the individual activity. Can you think of any other specific health and safety hazard other than these things which are mentioned here? Do you think there are other things need to be discussed in the arrangement section? Anyone from you? Anyhow, just read it again. I will share the slides with you guys. Read it again, go through, study the lecture again, and then come back at least one topic which you think need to be included in the arrangement section of the health and safety policy. Now again, same, we are still in the arrangement section. Yes? Sir, there is an internet error from my side and I did not understand what you said. Can you repeat? Which one you want me to repeat? Yes, sir. No, which one you want me to repeat? Sir, the previous one, before individual activity. Okay. This is the arrangement section of the organization of the health and safety policy. In the arrangement section, they have, like, these are the some examples, like what need to be there in the arrangements. In the arrangement section, they need to ensure or they need to define that how and who will carrying out the risk assessment, a specific team. Then information, instruction and training. Who is responsible for the trainings? Who is responsible to share the information with parties and with the employees? Who will monitor the compliance? Like, are we in legal compliance or no? Are we good in with the international standards or no? So this is compliance monitoring. It's inspections, it's audits, it's reviews. It can be anything. It can be identification or the frequency of incidents. It can be enforcement notices taken by the legal authorities or external parties, and accidents in the workplace, how many happened, why it happened, their investigation procedure, consultation with the workers, like how we are going to consult with the workers, how we engage the workers. These are all the things which are being
included in the arrangement section of health and safety policy. Like it's a clear and expanded section of planning, like who is responsible for risk assessment, how many risk assessments we need, and who will implement, who will check that risk assessment is being prepared and implemented, and who will ensure that we are in compliance with welfare facilities. For example, the project I'm working here, it's required one safety officer for each 50 workers. So who will be the one who is checking that? Who will ensure that we are in compliance? So this is the arrangement section of the organization. Here, can you think any other Sir, I have a question. Yes, please. Regarding lifting equipment, Yes. third party or internal inspection. Why is necessary? Well, internal inspection is required for each and every plant and equipment on the project. It should be done by a competent person for the lifting, but some of the lifting accessories are being inspected by internal and some are required third party. It depends on the criticality of the work. For example, the crane. Internally in the project, there are not much competent people who can check the stability of the crane, or you can say of the spreader beam. Spreader beam is a component which is being used for lifting, and crane is in itself a very complicated and critical thing. The accident or incident happening with the crane are mostly serious injury, major injuries, or fatal accidents. It have a huge loss. That's why they need to be inspected by third party. The purpose of inspecting by third party, that the third party peoples are certified, they are trained and competent. They have much more good grip than the internal peoples. For example, as a project party, I can inspect an equipment, but up to which extent, I don't know about the mechanical things. I don't know the hazards relating to the boom. I don't know the hazards relating to the hydraulic. So the third party guy who is coming, he have very good grip on this because it's his daily job and he is fully competent for that job. That's why this is being done by the third party. And when third party is inspecting, Okay, thank you, sir. no problem, you are welcome. And when third party is doing the inspection, they are also taking the responsibility that yes, we ensure that this equipment is safe. You can say that it means that they are giving a certificate of safety at the time of inspection. That's why periodic inspections are required. Okay, here are some more examples like what we need to have if there is a known working or noise or other hazards which are need to be included in the arrangement section. Okay, now we are going to the review of the policy. Why we need to review the policy? If there is a change in key personnel, for example, the MD, the CEOs, or the board of directors change, the health and safety policy need to be reviewed. If the management structure is changed, like big changes in the ownership, major changes in the process, for example, they are using cement to construct a cement powder to construct the precast elements, and suddenly they start using, instead of the powder, they start using a paste material or any other type of material. So there is a change in process. If there is a change in technology, for example, before they are doing all mixing manually, but they bring the new machines, modern technology, so they need to review the policy. If there is a change in the legislations, like legally, for example, it was required that every 3 years policy need to be reviewed, but government changed it. Government said no, every year need to be reviewed, so it need to be reviewed. If there is accident happened in the project और more incidents are happening और एक ऑडिट कंडक्ट किया गया है, ऑडिटर ने कुछ मेजर फाइंडिंग्स दी हैं, तो पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा. और वर्कर्स ने कोई फीडबैक दिया है कि हम workers given the feedback that we are not feeling safe in the project or in the workplace, we have these 1 to 3 number of issues, so it need to be reviewed. And annual review is also a legal requirement. Now we are going to talk about the international standards for policy, article 614 of ILO recommendation 164. It clearly explains all the requirements of health and safety policy. It requires employees to set down in writing and arrangements for health and safety policy. So article 14 जो है ना recommendation 164 का,
उसके मुताबिक एम्प्लॉयर जो है वो बाउंड है एक रिटर्न हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है ये लिखी होनी चाहिए और ये प्रॉपर लैंग्वेज में होनी चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और सबके साथ कम्युनिकेट की जानी चाहिए। What are the three key parts of the safety policy we just discussed? What type of targets might be referenced in the policy and where? टारगेट्स जो होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में लिखे जाते हैं। क्या हो सकते हैं? जीरो फेटेलिटी हो सकता है, लेस फर्स्ट एड केसेस हो सकता है और जीरो एलटीआई हो सकता है। ये कुछ टारगेट्स होते हैं इसके। तो अपना जो एलिमेंट 2 है, we have finished our element 2. It was small, but the next one is a big element. Anyway, anyone have any questions so far from this? This is all about policy. No, sir. This is all about policy, health and safety management system and policy. So even from here, you can understand that how important the policy is. Policy have three components. Policy is signed by the managers. Policy is signed by the most senior person. It should be written. It should be in easy language. It should be communicated with everyone. It shows the management commitment. It shows the roles and responsibilities of different persons. It shows that how we are going to achieve our targets, and it need to be reviewed if there is major accident, if there is change in legislation, if there is change in process, change in technology, change in ownership, change in the organization structure, or annual review. This is all policy, which I just summarized in 2 minutes. It's very easy, understanding and interesting. Just you guys need to go through it thoroughly, and it will be a very important question for exam as well. Assalamu alaikum. Sir, kindly send the all points in our group. Yes, I will share the slides and I will share the lecture as well. Thank you, sir. No problem. You are welcome. Any other question? Sir, how many lectures are remaining? We have 4 or 5 elements, you can say, and we have completed so far 2. So means there are 2 remaining, 3 remaining. So inshallah, we will cover that as well.